I'm asking about your profession actually. I'm software engineer. Oh, fuck me. Money, money, money. All cash. Huh? Yeah, I mean, I'd like to do it, and I guess I get good amount of money out of it, then it's fine. Wow, nice, nice. Yeah. Actually, I also wanted to like become an engineer. Like my father has put me like one of the college in like that is situated in Prayagraj. Mm-hmm. But somehow I followed my passion and went IHM Bangalore. Like मुझे पसंद था थोड़ा सा ऐसा कुकिंग वुकिंग करना है ना. So Mm-hmm. I've given one exam that is known as NCHMCT, and I've Okay. got a good rank, and Mm. I've got a good college after that. And then I've been in Bangalore like for 5 years, like 4 years for graduation, and then 1 year like I was working in Satyapol, that is a Reliance brand, right, Good. as a store manager. I mean, you love what you do today, right? Yeah, yeah, actually. Then it doesn't matter. There is always, there is always an opportunity cost. You have to leave something in order to grab something, Hmm. right? Yeah. So you cannot keep your legs on two different uh, plane, otherwise you know the Yeah, result, right? yeah, So actually. if you're happy, if you're getting good money out of it, you can carry over your life. It's all right. Not everybody have to be rich all the time. And I'm not rich by the way, so Hmm. it doesn't mean That's okay. anything. Yeah, That's yeah. okay. If you're satisfied from your life, if you can handle the day-to-day issues, who give a Hmm. shit? Yeah, you actually, know actually. Things were harder back then, in during our grandfather's time or father's time. Hmm. Yeah, it was difficult time, but today we have all the luxuries, so we can do the things. Yes, And in yes. and the best thing is we can still, by doing things that is Hmm. necessary, we Hmm. can still in parallel follow a lot of things that we like, because we have lots of time these days. Yes, yes. Yeah. For example, I love to talk, so I have a YouTube channel also. Okay. Yeah. Okay. That's So why I asked you. Like, are you a YouTuber? Like, you look like one. I don't know how people recognize a YouTuber. It's No, nothing actually, much. like It's you, just you. a, yeah, Sorry for interrupting you. yeah. Yeah, please continue. It's just a microphone and a headphone. It's not a big deal. Microphone is No, just no. so that. Actually, I didn't judge you on the base of this microphone and your headphone. Actually, like your calm personality and you were busy in something. I don't know, like where you were busy, but yeah, I've judged you on the base of your personality. Actually. So what the thing is, when you read things, when you study things, Hmm. then you get knowledge out of it, right? And Yeah. when you see the world with that full of knowledge, you see the pixels are missing in the screen, right? you Hmm. you see that judgments are not good. You see that people are doing which shouldn't be done. Hmm. So there are lots of aspect of the life you can, dimensions of life that you can achieve by the knowledge. You look like an enlightened person, actually. It's not like that. I mean, uh, the thing is, your perception of the data you are getting, you have more filters. Hmm. Like if you pass a, a light beam of light Okay. from a film which is red color, it Hmm. will only give red color at Yeah, that, yeah, right? yeah, yeah. Because it will be not able to judge other colors. Yep, But yep. if a substance have enough capability, for example a prism can differentiate different colors, right? Yep, yep. So if you change the instruments, if you change your knowledge, if you change your the base of your information, Hmm. then you will be able to dissociate all those factors of that information, because I see the same world as everybody's looking at, Yes, right? yes, yes. So it gives you another layer of perception filtration that can give you a lot of access, right? Yep, Access rights to the yep. different minute information. Hmm. So that's the By thing. any chance, like, have you read that book, The Secret? No, I'm sorry, I haven't, but I Okay. will write it down if it's that valuable.
I love to read books. Yeah, actually, I do. I also do read books. So, like, I was going through this book. The book name is like The Secret. Mm-hmm. So, like, there was a lot of thing about law of attraction and all the things, frequencies about your thoughts that goes Mm-hmm. to universe and match the frequency, right? So, yeah, like, Uh, Give me my. Let me give you my YouTube channel name. Otherwise, if we disconnect, it will be helpful because anything can happen, right? yeah, yeah. I don't want to lose intellectual people in my life. Okay, so what is this Yeah, name? pkworlz Talk Talk. yeah. Okay, I think it talks. interesting. I have to figure it out. The fuck is my phone button? Yeah, great. Yeah, it's plural. I think talks. Just hold on a second. Yeah. I'll be your subscriber after this. Now you can comment on channel and you can share other stuff also to me. You can go to my Absolutely. Instagram, pkworlz, so we can chat about things, what to study. I mean, I know you just it's just 2 minutes. I just know you. So believe me, Omegle helped me a lot. I met people like just just like few conversation and it goes like 4 hours. Oh my god. Oh my god. So it's literally there. The person is talking to me so much involved into my conversation that we took like 4 hours and we are still friends on Instagram. So that's how it Actually. goes. Yeah. hmm Yeah, bro, I've just subscribed you and you have 49. Actually, I'm the 50th Oh, subscriber. thank you very much. I will upload this video. Yeah. So yeah, Actually, you were talking about the secrets. yeah, so yeah, I was going through this book and like that has changed me a lot actually about my thoughts, about Hmm. my perception about seeing the things in the Hmm. world which are around us, right? So yeah, very very interesting book that is. In short, yeah. Can you give me a little bit of introduction? I mean, obviously, I can go and look it down, but it's good if you speak about it, About me or about that book? about the book. So How it transformed you? What happened? How did you actually, get to that book? like this book is all about loss, Mm-hmm. loss of like this book is all about loss which are around us. Mm-hmm. So like if you follow the book as the book says, Mm-hmm. so yeah, that will going to change you a lot actually. Like there is a lot of things which you read over there, and like you are aware about that, but Mm-hmm. actually what can I say actually? Mm-hmm. uh, Actually, I don't have any word to describe the book. But yeah, let me open the book. I will tell Yeah, you about this book. Yeah, just hold on a second. The Secret Review. because my attraction towards the book came from one of my friend who suggested me the book called ये क्या आ गई? Cash Flow Quadrant. And So that was by Robert Kiyosaki. So to read that, by who? By yeah, who? what? By who? Like who was the author? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Okay. Yeah. So to read that book, I found another book called Rich Dad Poor Dad. So Let's start. there, yeah, there I started understanding the basics of how book gives us the information because I have seen movies, I have seen serials, I have seen a lot of things, YouTube XYZ, Mm-hmm. but books are something which gives you the in-depth thought process of the author, which Mm-hmm. is not possible by because the retention time of a video is like not much. The it, Yes, actually. and the video is something that is giving you something, trying to establish something in your brain. Mm-hmm. But while you read or listen to a book, the
there is a different chemical reaction is going on. There our brain is basically interpreting the data Okay. and trying to imaginate data in a way that we are a part of that situation or whatever is going on in the book, right? Mm-hmm, So mm-hmm. we have a greater association with the book in compared to anything else, Okay. any other sense of perception. Mm-hmm, mm-hmm. For example, if you're in a situation, your brain is not thinking, your brain is basically accepting things, right? Okay. Mm-hmm. But when you read the book, you imagine things. If I say Rahul, so you think about a person, automatically you get a human being in your mind, created by your mind, right? Yeah, like I have lots of Rahul in my life. Yes, yes. And So, then if I say a Rahul have a red cap, then again your brain activates. Okay, mhm. Rahul, there is no face in your brain still, but there is a red cap on Rahul. And what kind of cap? Oh my God, It's that is not deep shit, there. but that is deep shit. Exactly. So Mm-hmm. now, if I give more information, Rahul had a wife which is dead. Mm-hmm. Now your brain start triggering. Okay, what's the cause of death? Was she Okay. pretty? Was someone else the reason? Was Rahul was the reason? Was police came? Mm-hmm. 100 things, right? Uh-huh. Mm-hmm. Then story goes on. Then Rahul come to you, tell you the story why his wife is dead. Uh-huh. What was the issue? Was what was the problem? Mm-hmm. His brother was problem, his father was problem, her brother was problem, her Okay. family was problem. If you go inside, I mean zoom in, like 100% zoom in, you get lots of information. You can Mm-hmm. write a story right now, starting from a name Rahul. Oh my God. Oh my God. Can you think? Yeah, yeah, yeah. So That's why I told you that it is a very deep shit, bro. yeah, everything is deep. Everything is deep. Have you heard of Hubble's deep field? Hubble telescope or deep field? Yeah, Hubble telescope Mm-hmm. have a deep field, means when the telescope is aimed to a particular direction, then it is Okay. called Hubble's deep field. Okay. Okay. So Hubble's deep field means it's capturing the in-depth data of a particular direction, Mm-hmm. of a particular point, you can say, in the universe. So if you dig into a particular point of the universe, you Okay. get thousands and millions and billions of galaxies inside, Uh-huh. and you get millions of histories that have been there. That happened in past. Yeah. Yes, Yeah. that held in the past, and that is coming to you right now. And imagine what you have lost till now, and what is the opportunity from this point in the Mm-hmm. future. Bro, don't feed me all this knowledge inside. You're gonna be crazy. No, no, bro. Actually, I was just smoking stuff. Anam. Yeah. So it will be a lot for me. Like for today, it will be a lot. Yeah. And this is one thing. This is Hmm. just a Rahul and a Hubble deep space, which have no significance. It's just an imaginary thing I just told you, right? Hmm. Huh? Yeah, yeah, absolutely. So it's I feel like this world is amazing. The We should be probabilities, thankful, actually. We should be we thankful. must be thankful. Yeah, seriously. And when I see the world probabilistically, Hmm. it amazes me. Like if if my birth was 1 second before, I Hmm. might have not met you right now. Okay. Can you imagine this? Yeah, yeah, I can imagine. I can imagine this. If my father stopped a few moments before, I wouldn't be there. Oh And my it's not God. me, it's you, it's everybody, right? Hmm. Acha, So what are your thoughts about like second life? Like uh, how do see, you take this question? one person asked me this before also. Hmm. I was just roaming around on the Okay. Omegle. Hmm. So I explained It it means you there. spent a lot of time in Omegle. No, not a lot of time, but whenever I come here, I try to Hmm. spend a quality time. Not
just like jiggly wiggly thing, Mhm. just a quality time. So it gives a window to someone's life, right? Yep. So I Yep. try to dig in. Hmm. So I try to connect a person according to the person's perception. Okay. If a person is in funny mood, if I try to give him the howl deep space, Skip. escape buddy, escape. He's not interested, right? So we have to kind of make No, a. actually, I have an interest in science. Like I Yes, used to watch a that's why lot I'm of. talking to you in this mode. That's why we are trying to resonate each other's thoughts. Mhm. Mhm. So you Mhm. asked about the second Second. life thing. Yeah. See, to understand the second life, we Hmm. must first understand what is life, right? And Yeah. people, Okay. what you know, what people always try to label something, Like was. or always try to label something like, for example, this is miracle, this Okay. is X, this is science, this is vegetarian, this is non-vegetarian. Mm-hmm. We don't know that we are just a soup. We are just a particle interacting with other particles, right? Yeah. We're How do just an you, item actually. Item. yes, Item. Item. Yeah. What? atoms. Items. So Yeah. even the atom have particles inside it. So Yeah. if you Yeah. go, if you break an atom, if you go and study about large hadron collider, which is LHC, what they are trying to do, they are trying to collide the smallest particle that is known, that is They proton. collide and release the energy. Right. Yes, release energy, and they try to find what happened, like how many parts in it, it breaks, something like Mm-hmm. that. Mm-hmm. So Mm-hmm. that's a different topic. So what I'm trying to explain here is the life. Yeah. Yeah. So Yeah. what is life? How, first of all, life, if we as a conscious human being, we try to find out the meaning in something, right? That Mm-hmm. leads to us to the perception of second life, first life, third life, xyz life, or reincarnation, or resurrection, these kind of things. Sometimes Okay. it goes religious ways, sometimes it goes scientific way. Scientific way. Yeah. Yeah. Mm-hmm. So people have curiosity, Yeah. and curiosity with, I would say ki curiosity with a less burden. They don't want to take a burden to study, Mm-hmm. right? They just want the answers, and it's Yeah. not possible to explain everybody everything. Mm-hmm. So the thing is, how do you see the life? What is life according to me? Mm-hmm. If I want to say what is life, I would say anything that separates themselves from using an envelope from their external environment is Okay. life. Do you understand? No, no, I didn't get it. Can you please Yes. elaborate in a simple way? In a if simple way. if I try to talk everything, it for, will be a for me, huge for me, class. it was a bouncer. For me, it Yeah. was a Okay. bouncer. Let me talk in a very simple way. Hmm. So anything that differentiate itself from the external environment using an envelope. You know envelope? Envelope, I didn't get it. Envelope. Envelope means a layer of Okay, separation. okay, okay, That okay. is called life according to me. It's not, I don't know if it is a theory written somewhere. It's something that I understand. How? By Any, yourself, or like have you read anything and then you came I to don't this know. point? This is how I deduced the life in my brain. Okay, okay, okay. Maybe it can become a theory if I write somewhere or release a paper. I don't know. So Mhm. this is how I understand, because this is something common I have seen. Have you heard of amoeba? Yeah, yeah, absolutely. So amoeba is something that separate itself from external environment using an envelope. Okay. So if you see anything that have life, Hmm. do the exactly fundamentally same thing, right? Okay. For example, if I remove my outer envelope, my skin, Okay. then I will be not alive. You'll be not a life I if will you. be not a I will be not a alive person anymore. Okay. If you do this thing with any living organism, if you try to remove the separation, the thing will be non-living at the end, Okay. right? If you peel off the outer envelope of amoeba,
Mm-hmm. the amoeba will be dead by then. Okay. Yes, yes. So anything that any particle that separate itself from the external environment Mm-hmm. called life and try to multiply itself, Okay. right? So if I am able to separate myself, for example, if I am not able to put myself in a glass like a Mm-hmm. liquid, then Okay. I am alive, right? Mm-hmm. But Okay. if I go inside a mixture grinder and switch it on, and someone can pour me in glass, I would be not a live person at that moment, Mhm. Yeah. because I'm interacting with the environment now in a Yes. different manner. So Mm-hmm. how do you explain second life? If you Yeah. are able to envelop yourself again, then Mm-hmm. it's your second life. Yeah. Yeah. Is it possible? In some cases, I believe. You believe, but is it possible? How? Actually, like no one has ever experienced it, but yeah, like as per books, as per religion, yeah, like there is second life. There is something that's very superpower and all the things which are making us to like live together and again. What can I say actually? Actually, I See, don't have any words like that is a yeah, very I understand what you're trying to say. My question arises that hmm the pkworlz or Prem Kumar, my name is Prem Kumar, I'm a okay. personality, I have a history, hmm I have a physical reality, I Oh, have a particular arrangement of things, right? If someone is able to copy everything, right, okay. hmm then there is a possibility of a life, another life. But if there is Do you a think it is sick, possible? Do you think like in after 100 year or after 200 year, it is going to be possible to like regenerate from our DNA? Like nowadays, scientists is talking about like dinosaurs, like they I are would going. call I would call that life, not second life. You Okay. understand? Because my history is my history, hmm not his history. If someone is able to replicate me, still that organism have his own history that he is built by a particular scientific process. But there will be some part of yours, It's like. okay, even, but the history will be different, right? hmm Even Okay. he have my memories, but hmm his history will be different. So he will be a fork of me, right? Another branch of me, not me. hmm Maybe I am living together. Who knows? Okay. If we are able to, if we have so much control on our physical But reality, actually, like, sorry to interrupt you in yeah. between. Like, I was watching one video on YouTube. Mm-hmm. So, like, there was a like type of civilization, like type one, type two, type three civilization. Mm-hmm. So, in type three civilization, like they were talking about like at that point we are not well, we don't actually need physical appearance, है ना? In type 3 civilization. Mm-hmm. Actually, there will be all data or manipulating the things which Mm-hmm. are around us. Yeah, yeah, that was it actually. Like this body is not required. Uh, in some point of time, like your consciousness is more important rather than your body. Mm-hmm. Yeah. So how I see this, it's little different. What you are talking about is either it's superficial, away from the physical Actually, reality, like just you right? see, it was just Yeah, a theory. It was just yeah. Give me a moment. 1 minute, please. no issues, no issues. Take your time. Yeah, that was actually my mom came to ask What time something. issue? Yeah. So what we were talking about? We were talking about life, Yeah. and they have So interrupted. see, there are two ways of thinking. First, So, first is imagination. mm-hmm, Second is belief, mm-hmm, right?
Fuck. Wait a minute. Wait a Wait, minute. wait. What's going on? Actually, some video played on my YouTube Okay. automatic. I don't know how. Uh, okay. So the thing is, there are two different things I talk about. Is first is Imagination. imagination, Yeah. second is belief. Both of these things are having a great capability of human thinking, cognition. So, but the problem is, if you take it as a reality, then the issues begins. I would not like to talk much about this, but the Hmm. thing is, imagination. In imagination, what we can do is, this is a bottle, Okay. this is a mobile, right? Yeah. Yeah. In imagination, if I tell you to join these two things, Not possible. in imagination you can do Okay. it. In imagination, yeah, it In is possible. imagination you can see that mobile is going through the bottle, Yeah. mobile became the bottle, bottle became the mobile, Yeah. mobile became me, me Mhm. became mobile, Yeah. bottle became me. Anything, the water Yeah. give a Imagine. birth to a Anything. new child, right? Yeah. 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 So I'll give you a very silly examples, right? Mhm. Yep. Yep. This is imagination. This Hmm. is the world of imagination where you can do, where you have no physical boundaries. In Okay. bottle there is a physical boundary. It's my finger, it's bottle, it's physically distinguishable, right? Yes. Yes. Absolutely. It have its own property, my hand have my own property, Property. Yeah. right? If you cut this, you will get blood. If you cut this, you will get water. Mm. Mm. So two Yeah. different physical worlds, Hmm. physical foundations. In Hmm. imagination there is no physical foundation, Foundation. Yeah. right? You don't, you are not even thinking about the nervous system, you're not thinking about the digestion system while Hmm. you are talking about second life. Will that person digest food? Will that person require sunlight? Hmm. Will that person have brain? will will If he is not need, if the person is just if a person is just a cognition, then why Hmm. there is a teeth? There is Yeah. no requirement of teeth, Yeah. right? Yeah. Teeth have its own requirement, Hmm. nose have its own requirement to breathe, to get inside something. Yep. On function. Suppose if you are able to eat just by going to sunlight, Hmm. is there any use of your mouth? No, not at all. If you are able to communicate with others without speaking, do you need lips? The No. structure of a fundamental human being will change at that moment, right? Hmm. We don't consider that. We consider everything flat, and this Hmm. thing we give weightage to one particular thing. If you Hmm. disturb one thing, it will destroy everything, Everything. Yeah. right? Hmm. Another thing is, this is imagination, by the way. We are free to do anything. We can exchange my, you, I can put my head on a elephant, elephant can put his head to me. It's all imagination, we can do anything. Hmm. Another is belief. Belief is another brother of imagination. Imagination. So Yeah. belief came out of something that people have imagined and wrote. Hmm. So they give you an opportunity to either consider it or don't consider it. Okay. Both of case you will see the people are fine. Hmm. If, are you Hindu or Muslim? I'm a Hindu. My name is Abhishek, bro. By Okay. the way, Abhishek. So if I tell you there is a creature Hmm. with a human body and an elephant head, Okay. you will say no, this is not possible. But we believe on Ganesh ji, Ganesh ji. Yeah. right? We believe on other people like that. I'm just giving you one example. I don't talk about this much because it becomes a huge issue. So there Hmm. are two kind of people. Again, one who believes, one who don't believes. One is called believer, one is disbeliever, right? Hmm. So So, do you believe, like in earlier days, it was possible, like we have lost a lot of knowledge in the past, like about this. Like if I talk about Ganesh ji, like you just said, like mhm, he was having elephant head and human body, right? So, do mhm. you think it was possible in past, and now we have lost all the things, and we have to start from the very beginning, from the scratch to See, like from Dubai? I got it. I got it.
So, um, see, one thing is there. I told you na, in imagination, it is Mm-hmm. possible to add some summation of this Mm-hmm. two different bodies, right? In Mm-hmm. imagination. Yes, yes. But in reality, there is a physical foundation to everything. So if I tell you that how Ganesha was born, Mm-hmm. then there is again a trouble, right? How Ganesha was born? Mm-hmm. Was he a human? Mm-hmm. Will you consider a person coming out of sweat or whatever XYZ substance Yes. is a human without an activity through which human comes out? Mm-hmm. So then you have to believe it, either believe or don't believe. Okay. So how I perceive this is, some people might have imagined something, Okay. there was no way to record it, so Mm-hmm. people wrote it, By maybe storytelling. stories or whatever. I'm not Mm-hmm. saying it's true or false, that's a different matter. That's Yeah, yeah. what, I'm not there. This Mm-hmm. is my perception, this is my opinion. Mm-hmm. Not to criticize anything, not to say anything about the holy scripture, right? Yeah, yeah. But where we are talking intellectual, I'm just Mm-hmm. trying to put my perception out. Yeah, yeah, So the yeah. thing is, if I have only one way to quote down something, Mm-hmm. to distinguish something, what I'll do, I'll try to give information about my brain is processing, right? Mm-hmm. So for example, if I tell you that there were two people fighting with each other, one was a bad guy, one was a right guy. Mm-hmm. Right guy killed the bad guy, and the Okay. bad guy, sorry, right guy wins. Mm-hmm. And then we celebrated, everybody celebrated this. uh, Now to remember this, that bad guy should be killed, mm-hmm. we celebrated it every day, Mm-hmm. and we are glorifying it every day, every year. Okay. So first we had a itna bada ravan, right? Then we had a itna bada ravan, so Mm-hmm. that more people can see it. Then we had itna bada ravan, so that more people can see it. Now Mm-hmm. we have itna bada ravan ki whole gaon can see it. Maybe Ravan was a normal human being, we don't Mm-hmm. know, Yeah, right? sure. Mm-hmm. But when people gather, when the mass people gather, things Mm-hmm. get exaggerated. Word of mouth. Yes. And Mm-hmm. things get manipulated also. Yes. So nobody knows what's the I also truth. believe in this. I have read it. Mm-hmm. It depends whether I believe or not. Actually, it doesn't matter. Yeah. Even if I believe it, what happened? If Mm-hmm. I ask, Nothing is going to if change. I ask Sivji, please give me XYZ thing, Mm-hmm. nobody is there to help me. I asked in my childhood, I asked so many things from Saktiman. Mm-hmm. Saktiman never came to help me. Mm-hmm. I used to believe that Saktiman helped me. Mm-hmm. शक्तिमान will help me. शक्तिमान आएगा बचाएगा. Uh-huh. अगर मैं कूद जाऊंगा तो शक्तिमान आएगा और बचाएगा मुझे. Mm-hmm. And many people many child will got killed in this Mm-hmm. activity. So they have to write a disclaimer that अगर इससे कुछ मिलता जुलता तुम्हें दिख भी जाता है ना, तो ये सिर्फ क्या है, महज एक इत्तेफाक होगा. आप Uh-huh. समझ रहे हो? Uh-huh. But the problem with this religious thing is there is no disclaimer. Mm-hmm. That's why people believe it. So, are you a scientific person or a spiritual person? If you say I'm an intellectual person, then that will be a better description. Okay. Uh, Now uh, see, now see, I have labeled you. yeah, exactly. You're trying to categorize me from others, or you're trying to categorize others, and fitting me somewhere, trying to fit me somewhere. But Yeah. what if I say I play football and I'm a spiritual person? Is that not possible? Yes, possible. Yeah, it is possible. Yeah. Mm-hmm. So it's it's not about what, it's all about what we learn Mm-hmm. from each other. And I have learned from each other. I don't read so much of books. I'm not a book bug, Mm-hmm. but I try to understand physical reality, what's going on Mm-hmm. outside, inside. Mm-hmm. So yeah,
It's not always science. Science is what? Science is not always true. One theory today is going to be obsolete tomorrow. Hmm. Obsolete, right? Yes, yes. So nothing is fixed. It's all probabilistic. Maybe the thing we believe today is not going to be the tomorrow's belief. So yeah. Hmm. Bro, you should read this book. Like the book I've I just. will definitely. I have written this Okay. on my notebook. Yep. So now let me tell you about this book. What is this all about? So I'm going to read it for you. Huh? Okay. Sure. What is this book all about? Mm-hmm. So, like the author name is what is his name? R. Honda. Yeah, he's a very famous author. So he's telling that you are probably been sitting there wondering, like, what is the secret? I will tell you how I have come to understand it. Mm-hmm. Okay. We all work with one infinite power. We all guide ourselves by exactly the same laws. The natural laws of the universe are so precise that we don't even have any difficulty building spaceship. We can send people to the moon, and we can time the landing with the precision of fraction of second. Okay, Yes. and wherever you are, India, Australia, New Zealand, Stockholm. So one law, we are all working with one power. That is one law. It's attraction. Okay. Okay. So the secret is the law of attraction. Everything that's coming into your life, you are attracting in your life, and it's attracted you by virtue of the images you're holding in your mind. It's what you're thinking, whatever is going on in your mind, you are attracting to you, right? Mm-hmm. And this phrases enters from this quote: every thought of your is a real thing, a force, by Honda, R. Honda. So this was the just one paragraph. Mm-hmm. So you can understand, like after you will read this book, you will get to know a lot of things. Yes. Yes. It looks like an interesting Yeah. way to express whatever the author had in his head, right? Yes. So how I see the book, I see a book like um, there it's an impression or thumbprint of someone's brain. Hmm. So a book is not a physical thing for me. It's like a thought coming out of someone's brain, Yeah. and which is getting transitioned to my brain somehow And now using I those have a brief senses. on his thoughts. Yes. What So whatever he has I written. would not consider this book as a universal thought, right? Mhm. Yeah. Uh, Yeah. so there people confuses that this book is saying XYZ thing. This is the truth. This is the truth. Yeah. There comes a This is problem. a wrong way. This is a wrong way This actually. is the wrong way of understanding the book. Hmm. It's a book which gives you a dimension, or you can say a reality, or a glimpse of Yeah. someone's brain, Hmm. right? What he was experiencing or thinking, uh, or packaging something, right, as a Hmm. product. So but what people say is this is the truth. Their problems begin because every point, what my thinking is, Hmm. every point is unique in this universe. Hmm. Every point have its own perception of this universe. Yes. For example, what my eye sees is entirely different from your eyes, Yes. isn't it? Yeah. If And I actually, there was a one experiment held in back of the time. Like you must have seen one post about the images. Like you can see, like if I see that image, I can see the horses running yeah, forward. the illusions. You heard about that experiment, I believe. Yeah, yeah, Hmm. optical illusions. Yeah, Yes, optical illusion. yes. And even it's a cognition illusions also, Hmm. because if someone is right brained, so called, I don't know what's the theory about it, but Yep. someone think in a particular way, then uh, the guy perceives it in a particular way, or Hmm. sees a different image within a different image, right? So it depends. Sometimes people make memes of it.
I see a lot of thing inside that. Mm-hmm. So I have also talked about this in my one of the videos called teleological thinking. Mm-hmm. So some people believe that everything in this universe is so much calculated, everything is in this universe is so much engineered, Mm-hmm. everything in this universe is so much controlled by someone, by some superpower. Some superpower. Yeah. Yes, but I don't understand that theory. I don't know why. What's your thinking? Then I will talk about Do you this. believe in that? I'm asking you first. Yeah, I believe. I believe in this. I So you believe. believe that there is a superpower? Yeah, yeah, definitely. Um, There is something which is above us. Definitely. okay, okay. And by the way, I respect your and anybody's thought Mhm. process, because if I disrespect you, you will reject me, right? You Yeah. will say ये लड़का बकवास कर रहा है, मैं तेरी क्यों सुनूं? Mm-hmm. क्योंकि I'm challenging your 20 years of research or belief Mm-hmm. in just 2 minutes of conversation, which is not justifiable anyways. Mm-hmm. So, and I'm not here to change your mind, right? Just give me a minute. Just Yeah, give me. sure. हेलो. हाँ जी बताइए. बस अभी थोड़ी देर पहले. हाँ हाँ. यस ब्रो. Yeah. So I was talking about that the teleological uh, thinking, which means that everything is controlled and yada yada by some particular No, superpower, etc. I don't think so. Like it is controlled by them, but yeah, like there is something which is giving us a power to do the things by own. Mm. This is my belief. Yeah, it's okay. But Mm-hmm. what I try to understand is, Mm-hmm. um, how will you define that power? I mean, There is. you know what? If I say the aeroplanes, aeroplane is capable of taking me in the air and dropping me to a particular destination, Mm-hmm. then aeroplane looks like a bird from the distance. But when you come in front of aeroplane, you will see a lot of engineering going on inside, Mm-hmm. right? Mm-hmm. Everything have to be cross checked, and to fly basically, and to Before land taking. safely. Yep. Yeah. Mm-hmm. So to solve a basic thing, we have to put entire humanity in it. Mm-hmm. Engineering of material, engineering of aerospace, engineering of a path, engineering of whatever, yada yada. So think about that. You are giving a just a label. Again, you're labeling. Mm-hmm. There is a superhero. There is a superpower. Okay. Why it is not possible to think happen by its own? Why? If sunlight is coming Mm-hmm. and the water droplet is getting energy, vibrating, coming up in the air, Okay. going and become cloud by condensation because temperature is different, Mm-hmm. how are you capable of saying that someone else is doing? So, do you think it is just a coincidence? Why it should be a coincidence? No, I'm asking to you. Yeah, Like, I'm if it telling is you. not, if it is not driven by any superpower, Yes. so do you think like it's all a coincidence that we are here and talking to each other now, and this universe has created by just by coincidence, Okay, okay. just one big I bang thing? understood. What do you think coincidence is? Coincidence is like the things which happens automatically, automatic. Ittafaq. Ittifaq, yeah. And Ittifaq will be the right word, yeah. yeah, Bas ittafaq. ittifaq. That's the literal meaning of coincidence. Uh-huh. Ittafaq have a unique property that is called uniqueness. Mm-hmm. इस दुनिया में क्या कोइंसिडेंस नहीं है? Just tell me this. You are born in a house. Mm-hmm. Is it a coincidence? You are the only one. You are the only one talking to me. There Mm-hmm. are 10 people talk to me on this platform Okay. before you.
Mm-hmm. That is also a coincidence. No, no, I'm not saying Let that me give it's you okay. a perfect answer, Mm-hmm. right? Mm-hmm. This is the water. Mm-hmm. I put a little bit of water in this, right? Okay. Color it, color it with the red color or whatever. Mm-hmm. I take a paper, I spill it, right? Okay. Then, when everything settles down, a beautiful picture came out. Mm-hmm. Do you think that picture is beautifully created, or it is a coincidence, or it's a probability? Just It was a probability for it sure. was a probability for sure. Yes, Mm-hmm. the beautifulness lies underneath the probabilistic Mm-hmm. system, Mm-hmm. right? Okay. If you replace coincidence with probability, Mm-hmm. then everything become normal. Your excitement goes down, and we seek for excitement. Okay. Now I can see you, by the way. Yes, bro. I was actually smoking because of that. I have covered my camera. Okay. Mm-hmm. So the thing is, if you replace coincidence word from the probability, you will you will find a lot of ease in your brain. You will get away from the excitement. For example, your face is a coincidence or probability or what? You're beautiful. Is it a coincidence? Someone is ugly. Is it a coincidence? He's ugly. Earth is beautiful. You will say, "Oh my god, biggest coincidence." There are different planets which is like Earth. Mm-hmm. Is it a probability that Earth is Goldilocks zone, or we labeled it Goldilocks zone? अगर हम मार्स पे होते विल लेबल मार्स को गोल्डीलॉक्स जोन. अच्छा ये बताओ, हम मार्स पे उड़ के चले गए, ये भी Okay. कोइंसिडेंस है? No, actually, my question, I didn't ask, tell you this, it was all just a coincidence. I told you, there is something, which is driving us, which is driving everything. It's not a coincidence. Mm-hmm. I've said you Mm-hmm. this. Mm-hmm. I didn't tell you it is all a coincidence. I believe in some superpower. There is some superpower, which is driving everything. Yeah, That superpower is basically human generated. That's how I think. all of the universe. Yeah, I'm not just only talking that's about this Earth. Anna, I'm yeah. I'm talking. I'm talking about whatever human can think. Mhm. We always try to seek a guardian. It's a human thinking. Mm-hmm. Human always look for someone's hand or umbrella on the top. So for example, if someone happens to me, I'll seek, oh my god, my superpower, please help me, I need you, I beg you, I blah blah you, right? So human is always seeking for a superpower, and they label it god, they label it superpower, they label it dark energy, they label it white energy, black Mm-hmm. energy, whatever energy. But why do you think there is a superpower? If you add a superpower now, there comes a lots of disturbance in the current physical reality. Then tell me one thing: why Yes. this all has been created? Why this Why big do you universe? think it That is created? so. Why do you think there is a cognition behind it? Mm-hmm. I'm telling you now, I spill the water from this. I never thought what picture is going to come out, but somehow human perceive it as a beautiful or ugly. We label it. Mm-hmm. But that picture is just a probabilistic result or consequences of the physical reality, the gravity. If there is no gravity, that picture was not possible. If the paper is not able to absorb water, that picture was not possible. If water is not water, that picture is not possible. Mm-hmm. If the temperature is not the same, for example, if the temperature is different, that picture is not possible, Okay. right?
because it will become an ice cube by the time it lands the paper. Mm-hmm. The color lands the paper. There will be a different picture then. Okay. So what I consider is any action has a reaction. That's the basic principle. That's how I think. Mm-hmm. That's how my entire knowledge gives me the answer, that every action have some reaction. One particle, one thing, um, what you say, one thing interact with other, and everything interact with one thing. That is something I call the theory of everything. Mm-hmm. If I have not spilled the water, there will be no picture. अगर मेरे पिताजी ने मुझे पैदा नहीं किया होता, ये दुनिया मेरे लिए कुछ नहीं होती. राइट? हमें लगता है कि everything is created. There is a cognation, there is an intelligence behind everything. But why? Why? And हाँ, this is What human is the reason because behind doing because all the human things? human thinks in a human ways. Mm-hmm. Human doesn't think in a normal ways. है Okay. ना? ह्यूमन डम चीजों पे विश्वास ही नहीं करता कि इट कैन बी अ डम थिंग. अच्छा, एक बात बताओ, अभी बिजली चली जाए पूरे दुनिया की, तो क्या होगा? Blackout. अब क्या तुम ये कहोगे कि ये किसी ने काट दी बिजली? देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट. गवर्नमेंट डूइंग इट टू सेव फ्यूचर्स एनर्जी. There can be some scientific explanation for that. Maybe like solar winds. Anna. Even if nobody knows the reason, people will come out of the reason. I'm because betting you. because I'm betting you. we need answers. We If need answers yes, for our we justification. seek, we seek, we We see. seek the result, the reason, Yeah. right? In Yeah. everything. अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे ना, Mm-hmm. किसी भी तरीके से, मान लो हम मार्स पे हैं, अर्थ की लाइट चली गई, तो न्यूज पे डिबेट हो रहा होगा कि True. अर्थ अब चाहता है कि एनर्जी सेव करके मार्स पे अटैक करना. हाँ. हाँ. मून वाले कहेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ इयर्स अहेड, मून वाले कहेंगे ये मार्स वालों की चाल है, Mm-hmm. अर्थ को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है. व्हाट्स हैपनिंग इन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस? एवरीबॉडी इज सीकिंग फॉर द रीजन. ठीक है, तो ये इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग. आप ह्यूमन को डिटैच करो अपने आप से, और तब देखोगे ना दुनिया, तो यू विल काम डाउन. यू विल सी अगर मैं यही चैलेंज रखता हूँ कि इफ देयर इज अ सुपर पावर, देन Yeah. देयर इज अ जस्टिस सिस्टम ऑल्सो. क्योंकि अगर कॉग्निटिव सुपर पावर है, तो क्या वो इंसाफ नहीं मानता? क्यों नहीं मानेगा इंसाफ भाई? Like. अगर ह्यूमन को बनाना एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि बना है तो किसी ने बनाया होगा, Mm-hmm. तो उसको मारना क्या जरूरी है? सुनामीज क्यों आती है? So that जलजला we can क्यों आता so that we can learn throughout our experience, which we are having in है? the व्हाट काइंड ऑफ in लर्निंग the इज whole दिस life. ब्रो? आप अपने बच्चों को काट दे रहे हो. मैं बोलता हूँ कि आपके पापा ने आपको ब्लेड से ऐसे मार दिया, फिर वो कह रहे हैं बेटा इससे आपने क्या सीखा? इज इट द वे ऑफ टीचिंग? नो. क्या दुनिया को बनाने वाला इतना डम्ब होगा कि वो लोगों को मार के ये अगले लोगों को सिखाएगा कि देखो बेटा वो मर गए ना, तुम भी मर सकते हो? भाई वी नो कि हम मर सकते हैं. सो देखो, जब आप सुपर कॉग्निशन को इंट्रोड्यूस करते हो ना इस दुनिया में, तो उसके साथ सुपर जस्टिस भी आ जाता है. एंड Mm-hmm. वी सी दैट देयर इज नो जस्टिस इन दिस यूनिवर्स. एक बेचारी डियर जो अपना खाना खा रही है, बच्चे को दूध पिलाना है जिसको, वो रात में घर वापस नहीं आती है, कोई लायन उसे खा जाता है. It's a cycle actually. अगर अगर हम एक मिनट, अगर हम ग्रंथ के हिसाब से चलें, जो हमारे ग्रंथ वेद पुराण ये सारी चीजें हैं, तो उसमें भी ना 4 काल बताए गए हैं, है ना? हाँ ठीक है. 4-5 काल जो भी है, मैं श्योर नहीं उसको लेके.
तो वो भी एक साइकिल है। और ये सब कुछ मतलब एज पर द बुक ये सब इसलिए बनाया गया सो दैट हम अपने एक्सपीरियंस जो भी हम फेस कर रहे हैं थ्रू आउट द लाइफ, हम उसे सीखे और एक बेटर पर्सन लाइफ बने, मतलब एक बेटर पर्सन बने अपनी लाइफ में, या आगे चल के, या आगे आने वाली जो भी चीजें हैं। हम्म, और जो सबसे बड़ा कह सकते हो कि लास्ट स्टेज क्या है, जैसे होता है ना कि चलो ठीक है इस लाइफ में हमने ये सीखा, अगली लाइफ में हम कुछ और सीखेंगे, और फिर हो सकता है उसके जब यहाँ से हम सीख के तीसरी लाइफ में जाएंगे, लाइक देयर इज अ लॉट्स ऑफ लाइफ है ना थ्रू आउट द लाइफ। तो ये उस बुक की दुनिया है, बाय द वे व्हाट यू आर टॉकिंग, हाँ, राइट? हाँ, हाँ। सो एक जो सबसे लास्ट स्टेज होता है कि जहाँ पे कहाँ पे एंड होता है, हमारे हम सबका ये क्वेश्चन होता है। सो वो एंड होता है जाके परम ब्रह्म से मिल जाना, एज पर द बुक, है ना? नॉट या नॉट या आई अंडरस्टैंड, आई एम इन योर यूनिवर्सिटी राइट नाउ। यस, सो so I have to दैट obey इज द to दैट understand basically. Yeah. हाँ, सो दैट इज द लास्ट स्टेज जहाँ पे हमें वो संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, Hmm. संपूर्ण ज्ञान, है ना? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान, एक भी इंसान मुझे बताओ जो अपनी लाइफ में परफेक्ट हो, राइट? सिर्फ भगवान राम थे। आज हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं, उनके नाम पे बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, मतलब जो भी चीजें बनाई गई हैं, Hmm. सो दैट हम उनसे सीख सके कि परफेक्ट इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जा सकता है अपनी लाइफ में। Yes. करेक्ट। सो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे लिए सेट किए, और जो मैं आपको बस एक छोटे से सिंपल फॉर्म में समझा देता हूँ। सो परम ब्रह्म से मिलना बेसिकली ये है कि हम अपनी लाइफ में परफेक्ट बन जाए, ऐसे परफेक्ट बन जाए कि हम स्वयं राम बन जाए, स्वयं राम हो जाए हम। और वही हमारे लिए वो लास्ट स्टेज होता है जहां पे हमें हर एक चीज के बारे में, क्यों है, क्या है, कैसे है, क्या इसका यूज है हमारी लाइफ में, वो सारी चीजों का जब नॉलेज हो जाता है, उसको बोलते हैं परम ब्रह्म से मिल जाना। और दैट इज द लास्ट फेज जहां पे आप एक हो जाते हो, जहां पे आप ही अर्थ हो, आप ही यूनिवर्स हो, आप ही पूरा सौरमंडल हो, आप ही छोटा सा कण हो, आप ही छोटा सा अमीबा हो, आप हर चीज में हो। और ये सबसे बढ़िया एक्सप्लेन किया गया है, मे बी शायद आपने देखा हो लूसी मूवी, देखा है Hmm. लूसी? Hmm. Hmm. सो आई डोंट नो उसे कौन सा ड्रग दिया जाता है, बट वो जब ड्रग उसकी That, बॉडी, हाँ वो कुछ था, yes. उसकी पूरी बॉडी में जब वो फैल जाता है, तो Hmm. वो सब कुछ थी, वही डाटा थी, वही वाईफाई था, वही नेटवर्क था, वही फिजिकल फॉर्म था, वही इनविजिबल फॉर्म था, वो फ्यूचर में भी थी, पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है, Hmm. हर Hmm. जगह है वो। Hmm. और जब आप ये बन जाते हो, ये बन जाते हो, सो आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो। तो क्या This- वो आप मैं हूँ? कहीं ना कहीं इसका वर्णन भी दिया गया है ग्रंथों में, मैं बताता हूँ कैसे। मैं तो मैं नहीं रहा ना फिर, मैं है बताता मेरा हूँ सवाल ये है। एग्जैक्टली, ये तुम हो नहीं। एक गाना भी शायद सुना होगा, बहुत फेमस गाना है, मतलब मे भी, पता नहीं आपका इंटरेस्ट है उसमें या नहीं है। कौन सा गाना है बताओ? एक है, मतलब एक बैंड है, वो उसका गाना है, लाइक मत कर माया को अच्छा, अहंकार, मत अच्छा, कर अच्छा। काया का अभिमान, हम्म, है हम्म, ना? हम्म, सो दिस इज नॉट वी, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है, एज पर द साइंस ऑल्सो। ये फिजिकल बॉडी हम खुद नहीं है, हम कुछ और है, राइट? कोई एनर्जी कहता है, कोई आत्मा कहता है, सबके अपने अपने विचार हैं इस चीज को लेके। तो हम ये नहीं है, ये बस ये बस काया है, जहाँ पे हम बस वेश बदलते, कपड़े बदलते हैं, बट हमारी जो स्पिरिट होती है वो विचरण करती है, यूनिवर्स में घूमती है, मतलब यूनिवर्स तो नहीं, बट हाँ वो करती है सफर, पास प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है। और जब आप उन सब चीजों में मिल जाते हो, वहां से लाइफ एंड हो जाती है। सो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पे हम ह्यूमंस के लिए, सो दैट हम उनसे सीख सके। इवन अगर मैं बात करूँ इंडोनेशिया की, हम्म। शायद पता होगा वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिमों की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ये तो है। इंडोनेशिया में है। सो वहां पे मुस्लिम होने के बाद भी उनकी करेंसी में ना गणेश जी का फोटो रहता है। अब 2000 के, सॉरी 20,000 के नोट देखोगे, और जितने बड़े नोट होते हैं उनमें गणेश जी का वो होता है। और एक वहां पे वोल्कानो है जहाँ पे, मतलब बताते हैं कि 800-900 साल से गणेश जी का मूर्ति है वोल्कानो के मुंह के पास में ही। और छोटा, मतलब छोटे थोड़े बोड़े हिंदू हैं, बट वहां पे हमेशा पूरे साल पूजा होती है उन गणेश जी की। तो
अगर किसी एक पर्टिकुलर चीज को बिलियंस ऑफ लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। क्योंकि हम जब यहाँ पे इस अर्थ में आए थे, हमारे पास सेंसेस नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, पहले सेंसेस डेवलप हुए, हम छोटे से अमीबा थे और फिर पता नहीं क्या क्या हुआ इवोल्यूशन के थ्रू। वो भी एक प्रोसेस था, साइकिल। हमें नहीं जो पता वो सही है या गलत है, पर ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। मतलब इट्स समथिंग हाँ कॉल्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ। which is a human generated theory. हम्म, Nobody can say it's right or wrong. It's not even proved yet. हाँ। सो Even बस it वही, can be disproved in future. मोस्ट प्रोबेबली, हु नोस, नो वन See, नोस अबाउट इट। I am not stiff. हम्म मैं स्टिफ नहीं हूँ, मैं रिजिड नहीं हूँ कि भाई मैंने जो पढ़ लिया, मैंने जो सीख लिया है, आई एम स्टिकिंग टू इट। हम्म। Then I lose opportunity to understand you. टू लर्न, Yes, बेसिकली एक एक कहावत भी है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव लर्नड exactly, इन योर लाइफ। exactly. तो So I have deleted everything for now. I'm हम्म just listening to you, engaging to you, trying to understand how do you see the world, what you हम्म have seen. Maybe maybe I learn new perception. Who knows? मुझे नहीं पता था कि इंडोनेशिया में कोई जगह है जहाँ पे दिन रात पूजा होती है गणेश जी की। हाँ। अगर मैं कह देता भाई मेरे वो सामने ये पता है बात वर्ल्ड का, वो पता है वर्ल्ड का ना सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे बड़ा हाँ वोल्केनो जो हमेशा चलता रहता है। सो पूजा वो इसलिए करते हैं, सो दैट उनकी उनका बिलीफ है हाँ, कि एक गणेश आई जी एम उनकी टेलिंग यू ना, देयर आर रक्षा करेंगे। सर्टेन थिंग्स व्हिच इज बेस्ड ऑन बिलीव्स। हम्म ठीक है, और एक चीज मैंने बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, हम्म क्या था मैं भूल गया। दो चीजें थी, एक है बिलीफ और एक कुछ और था, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। हाँ, तो द प्रॉब्लम विद बिलीफ एंड इमेजिनेशन इज, हम्म इमेजिनेशन में आपके पास नीचे डिस्क्लेमर होता है कि भाई इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, जिसमें हमारा शक्तिमान, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, हम्म फलाना मैन, फलाना वुमेन आ जाती है। ठीक है, हम्म एक होता है हमारा बिलीफ। बिलीफ के नीचे डिस्क्लेमर नहीं होता कि भाई इसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। तो अब लोगों के पास दो ऑप्शन होता है, मानो या ना मानो, हम्म है ना। तो द थिंग इज कि अगर आप मानते हो तो आपको दुनिया उस नज़रिए से दिखेगी। ठीक है, अगर आप भूखे हो, आप बैठ गए, यार बहुत भूख लगी है, किसी ने आपको देखा, उसको लगा कि यार लगता है इसको भूख लगी है, उसने हम्म आपको एक समोसा दे दिया या चॉकलेट दे दिया, आप कहोगे देखो भगवान स्वरूप खुद आए मेरे पास और मुझे मेरे भूख को निवृत्त कर दिया, निवारण कर दिया मेरे कष्ट का, राइट। अब उसी के बगल में एक बंदा बैठा है जिसको लगता है कि यार मुझे तो कोई बचाने आएगा नहीं, आई हैव टू टेक माई ओन एक्शन। वो उठता है, वो रिक्शा चलाता है या कुछ और काम करके, झाड़ू लगा करके 10 रुपये कमाता है और रोटी खा लेता है। ठीक है, हम्म दिन दोनों का बीता, इसने अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिया, इसने अपने स्किल्स को बढ़ा दिया। हम्म ठीक है, तो दुनिया में आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे, है ना। एक मंदिर के सामने बैठा भी मिल जाएगा, एक रोड पे मिल जाएगा, एक झाड़ू लगाता हुआ, कोई कहीं कोई कहीं। और हम्म कुछ लोग बिलीफ सिस्टम को इतनी क्वांटिटी में कैरी करते हैं, कुछ लोग इतनी क्वांटिटी में करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, या कुछ लोग अभी भी एम्बिगुअस हैं, भैया मैं करूं कि ना करूं मुझे नहीं पता। बीच में। हाँ। है ना, दे आर कॉल्ड एग्नोस्टिक। हम्म उनको यही नहीं पता कि भैया होगा तो देखा जाएगा, मैं कुछ बुरा ना करता किसी के साथ, अगर कुछ कभी कुछ गलती होगी तो भैया माफ कर देना मेरे को, अगर कोई भगवान है ऊपर, ऐसे भी लोग। हम्म सो द थिंग इज इट्स ऑल, अगर आप देखो, अब आप मेरी यूनिवर्सिटी में हो, मैं आपकी हम्म यूनिवर्सिटी से होके आ गया, अब मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाता डन से। हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी चलती है। हम्म आप बिलीव करोगे तो भी आपको सब कुछ वैसा ही दिखेगा, आप बिलीव ना करोगे तो भी आपको वैसे दिखेगा, होने का वही होगा जो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह रहा है। हम्म आप अगर अट्रैक्ट करोगे गॉड को, तो कहीं ना कहीं आप मंदिर की तरफ खिंच के बैठ जाओगे। ठीक है, अगर आप बड़े आदमी भी बन गए तो आप मंदिर में दान करोगे, अगर आप भिखारी हो गए तो आप मंदिर से खाना खाओगे। हाँ हाँ। ये उसकी हायरार्की है। हम्म
ठीक है, अगर आप एग्नोस्टिक हो तो आप मंदिर के सामने हाथ जोड़ोगे, नहीं भी जोड़ोगे चले जाओ। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक क्लास है ह्यूमंस का, हम्म। और उस क्लास के अंदर ये सारी घटनाएं दुर्घटनाएं होती रहती। आप उस क्लास से निकल के देखोगे ना बाहर, हम्म। तो आपको दिखेगा कि ये घटनाएं सिर्फ ह्यूमंस में ही होती है। कोई डॉग, कोई बर्ड नहीं जाता किसी मंदिर। So do you think like we are living in a simulation? आई थिंक वी आर Like लिविंग इन अ as per रियलिटी। like अभी तक जो भी बताया, हाँ। मतलब जो भी कहा, मतलब उससे मुझे ऐसे ही लगता है कि तुम्हारे देर इज अ थ्योरी कॉल्ड लास्ट थर्सडे और लास्ट फ्राइडे। हम्म। तो उस आई थ्योरी डोंट में नो। ये, हाँ, उस थ्योरी में ये कहा गया है हम्म। कि आप आज जो भी हो, वो इसी थर्सडे को, लास्ट पिछला जो थर्सडे गया है, उसी दिन आपको सब कुछ दिया गया है। यानी जैसे मैं आज इस पीसी में कोई विंडोज इंस्टॉल करता हूँ, तो वो पीसी अब चालू हुई ना, तो उस पीसी को जो भी दिखेगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जो भी हो, वो डेटा लेकिन आज ही आया है। उसका इनकारनेशन आज हुआ है। तो ये भी एक थ्योरी है कि हाँ। एवरीथिंग स्टार्टेड लास्ट थर्सडे। तब उसको आप गलत साबित कर दोगे? नहीं नहीं, आई वाज जस्ट आस्किंग। भाई मैं कह रहा हूँ न्यूटन जो है, मैं आपके अंदर एक मेमोरी डाल दूँ कि न्यूटन 600 साल पहले आया था, आप तो वही बिलीव करोगे ना कि न्यूटन 600 साल पहले आया था। आप इस चीज़ से डिसएग्री कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो सारा डेटा आज ही डला है आपके अंदर। हम्म। तो आपको पता ही नहीं आगे क्या है पीछे क्या है, आपको ये पता है कि यही सच है। तो द थिंग इज कि सिमुलेशन है, रियलिटी है। सिमुलेशन क्या होता है? हो सकता है हम किसी गेम के पार्ट हो, आप कहोगे हम किसी मैट्रिक्स का हिस्सा हो। मतलब यू कैन, आई एम टेलिंग यू ना, यू आर स्टिल इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इमेजिनेशन। अभी आप बिलीव वाले से कूद के इमेजिनेशन में आ गए। अब यहाँ आपके पास पूरी आज़ादी है, आप इस मोबाइल को बोतल में घुसा सकते हो। तो मेरा एक सिंपल सा डम्ब फंडा, डम्ब समझते हो, हम्म। इंटेलिजेंट नहीं, डम्ब फंडा, यही रियलिटी है। समझ रहे हो? हम्म। अगर कोई मेरे को यहाँ पे ब्लेड से मारेगा तो खून निकलेगा, यही सत्य है। हम्म। अगर मैं सीढ़ी से गिर गया तो मुझे चोट लगेगी, ये सच है। ये कोई सिमुलेशन नहीं है कि मैं गिर गया और फिर दोबारा जन्म लूंगा, ये होगा, एक्स वाई होगा। दैट्स ऑल इमेजिनेशन। if you if you add pepperoni, if you add mustard sauce, if you add Szechuan sauce, that's all enhance the pizza. Pizza is just pizza base, वो आटा है और कुछ नहीं है। We are just a soup, we will become a soup, that's the cycle। क्या आप इससे डिसएग्री करते हो? नहीं, ये भी एक थ्योरी है। this can't be happen. This can't be happen. दिस इज हैपनिंग। कैन यू कंट्रडिक्ट दिस? No. आई कैन कंट्रडिक्ट कि नहीं भाई, पुनर्जन्म तो नहीं हो सकता। आप भी साबित नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये साबित नहीं कर सकते कि हम एक पार्टिकल नहीं। और ये पार्टिकल एनर्जी भी बन सकता है, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। यस, एक समय आएगा जब मुझे जला दिया जाएगा, मेरी कुछ पार्टिकल्स हो सकता है आपके पानी के गिलास में आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं आज मर गया, ठीक है, तो हो सकता है मैं आपके गिला, हो सकता है इस बोतल के अंदर किसी का शरीर रहा हो पहले। भाई मेरे ब्रेन में जो अभी हाइड्रोजन और Just ऑक्सीजन like है, fossil fuel, कि कभी वो डायनासोर्स थे। भाई फॉसिल आज फ्यूल तो रिजिड है ना, उसमें लोकोमोशन नहीं है। अभी सोचो मेरे सामने एक बंदा बैठा है, उसने सांस छोड़ा, मैंने सांस लिया, वो पार्टिकल मेरे ब्रेन में चला गया। जो इंसान थोड़ी देर पहले बगल में था, आज उस इंसान का एक हिस्सा मेरे ब्रेन के अंदर काम कर रहा है, मेरी लाइफ सपोर्ट बन रहा है वो। हम्म। आप जो सांस ले रहे हो,
क्या गांधी जी के पार्टिकल उसमें नहीं है, ये साबित कर सकते हो? Mm-hmm. हो Just सकता है? like how this whole universe is created. हो Just, सकता just. है कि गांधी जी के पार्टिकल आपके अंदर अभी हो। नहीं हो That's सकता? why some people call themselves stardust. भाई गांधी जी, देखो आप लाइफ साइकिल को समझो। गांधी जी मरे, Mm-hmm. I उनके got साथ it. क्या I got किया? it. Mm-hmm. वो बिखर गए इस दुनिया में, जलाया, हीट किया, जो भी किया। देन कोई चला, धूल उड़ी, धूल उड़ के जमीन में गई। कोई गाजर का पेड़ होगा वहां पे, गाजर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। आपके घर वो गाजर ट्रांसपोर्ट होकर के ट्रक में आ गई, आपने 20 रुपए दिए, वो गाजर आपके प्लेट में आ गई, आपने उस गाजर को खा लिया। नाउ गांधी जी का एक पार्टिकल आपके अंदर आ गया। क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है। एंड दिस इज द फिजिकल रियलिटी। आपके अंदर चंद्रशेखर आजाद है, गांधी जी हैं, जनरल डायर है, कौन जानता है भाई? आप किसी, आपको क्या लगता है आप जब मर जाओगे तो आप किसी के गिलास में पानी में नहीं रहोगे? रहोगे? It can be a possibility. इट इज अ पॉसिबिलिटी, कैन भी गया, इट इज अ पॉसिबिलिटी। आपके पानी में क्या मिला है भाई? आज जो पहले मछली वछली रही होंगी, आज उनका क्रूड ऑयल हमारे पेट्रोल में रहता है, हमारी टंकी में रहता है, कोई मछली का तेल। उस मछली ने सोचा होगा मैं किसी के पेट्रोल के जरिए फूका जाऊंगी? नहीं सोचा होगा ब्रो। उसके बाद भी उसकी रियलिटी खत्म नहीं हो रही है वो रियलिटी सब। खत्म नहीं हो रही, उसको मैं वो, सूंघ रहा हूँ। हाँ। वो पीछे से धुआं निकलता है एंड देन इट्स इन माय हेड। हम्म। मे बी वो एक न्यूरॉन में अटैच हो जाए और कभी निकले ही ना मेरे मरते तक। हम्म। ऐसे सोचो, मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसे सोचा जाता है। खतरनाक यूनिवर्सिटी है। बहुत बहुत खतरनाक। बहुत खतरनाक। हम्म। मेरे नशे ही रन हो गए पता है। आप कॉन्शियस हो गए ना, आप रिलैक्स नहीं हो अभी। आपके हम्म। दिमाग में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। नहीं नहीं। यहाँ से बैठे बैठे मैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता हूँ। कुछ हम्म। ऐसी बात बोल दूंगा जो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल। मैं कह दूंगा आपकी माँ नहीं है। आप सोच में पड़ जाओगे, यार ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या पता, बचपन से आपको झूठ बोला जा रहा है। बच्चों के लिए तो वही रियलिटी है ना भाई। हम्म। कितनी बिल्कुल। मूवीज में बेटा मरते समय मैं बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। ज्यादातर अमिताभ बच्चन के साथ होता है, मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ, माँ ऐसे मत कहो। हम्म। It can be a physical reality too, and it is a physical reality for many guys. They come to realize later. छुपाई हम्म। जाती है बातें। घर में किसी को कैंसर होता था पहले, तो लोग बताते नहीं थे। क्या बात करते हो आप? हम्म। अगर आप सोचोगे ना तो, आई एम टेलिंग यू ना, एवरी पॉइंट इन दिस यूनिवर्स हैव अ यूनिक परसेप्शन इन एवरी डायरेक्शन। मैं इस पॉइंट पे बैठ के इधर देखूंगा ना, तो इधर करोड़ों चीजें हैं। मैं ऊपर देखूंगा, करोड़ों चीजें हैं, नीचे देखूंगा, करोड़ों चीजें हैं, इधर देखूंगा, मैं आपको देख रहा हूँ, करोड़ों चीजें पता चल रही है। हम्म। अब आप कहोगे तुम तो बड़े ज्योतिष ज्ञानी हो रहे हो। हम्म। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन योर बेस, नॉलेज बेस। मैंने बोला ना, एक प्रिज्म ऐसी चीज है जो लाइट को 7 पार्ट में डिवाइड कर देती हम्म। है, बट एक रेड फिल्म नहीं कर पाती। दिमाग खोलोगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, बहुत कुछ एब्सोल्युटली। मिलता है, तो और मजा आता है। मैं तो कंटिन्यूअस सीखता रहता हूँ, रोज रोज सीखता हूँ। और अच्छी बात यह है कि आप जैसे लोग मुझे मिल जाते हैं, और मजा आता है इसमें तो। चार चांद लग जाता है। तो मुझे फिर ये एफर्मेशन होती है ना कि भाई चलो, जैसे मैं सोचता हूँ इस तरह से और भी लोग इंटरेस्टेड हैं सोचने, तो और मजा आता हम्म। है। वही मैंने कहा ना, 4-4 घंटे तक बात हो जाती है हमारी और पता नहीं चलता। भाई देखिए हम कितनी देर से बात कर रहे हैं। 1 घंटे 14 मिनट 1 घंटे से। तो होके होंगे आई बिलीव। हाँ। पक्की बात है। और हम्म। अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये भी सोचो। हम्म। सो इसका कंक्लूजन क्या है किसका? एज पर यू, किसका? इन सब चीजों का जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, कंक्लूजन। इन सब चीज का बड़ा एक आसान कंक्लूजन है। हम्म।
इन सब बातों का। हाँ। बड़ा ही आसान कंक्लूजन है, अगर आप इंटेलिजेंट ना बनो, डम बन जाओ, तो सब ठीक हो जाता है। चारा खाओ। सब ठीक हो जाता है, और खाओ पियो ऐश करो मित्रों, बस। हम्म, मतलब कि इफ यू एक्सेप्ट दिस इज द रियलिटी, देन इट सेटल डाउन। ठीक है, अगर आप अपनी माँ को माँ एक्सेप्ट कर लेते हो कि माँ तू ही मेरी माँ है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर हम्म, आप एक डाउट डाल दोगे कि यार तुम मेरी माँ नहीं हो सकती, सब बिखर जाएगा। हम्म, सब चीज, सारे रिश्ते टूट जाते हैं भाई मेरे। कभी कभी ना मुझे दुख होता है कि मैं क्यों इंटेलिजेंट हूँ, मैं क्यों देख लेता हूँ चीजों को। तभी धानुष ने आयरन मैन को बोला था। मुझे इट नहीं इज पता, मैंने देखी नहीं है, पर क्या बोला अच्छा, था? वो नहीं, उसने कहा था कि तुझे लगता है कि सब तेरे पास ही नॉलेज है। हम्म। मतलब ये कर्स है एक्चुअली। हाँ, अच्छा, तुझे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये पता जब चलता है जब आप बन जाते हो। मैं अपने दोस्त से भी कभी कभी बैठता हूँ ना, तो बोलता हूँ भाई, मेरा मन करता है ना, मैं अगर नॉर्मल बिना अनपढ़ इंसान रहता ना, तो खाता पीता सोता, कोई टेंशन नहीं रहता, बाइक उठाता घूमता इधर उधर। पर खा मखा दिन भर बड़े लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी भी बुद्धि खराब करता हूँ, और मेरे घर वालों से भी लड़ाई होती है इस चक्कर में। उसके पॉडकास्ट देखते हो क्या आप? रणवीर इलाहाबादिया। नहीं, आई डोंट लाइक दिस गाय। वो देखा हुआ है कुछ भी? मैंने पहले थोड़ा बहुत देखा है, बट अच्छा। द प्रॉब्लम इज कि वो, मैं कैसे बताऊं, ही इज अ गाय हु सुगर कोट्स अ लॉट। हम्म, एक होता है ना कि रियलिटी हार्श होती है। हम्म, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं, जैसे दूरदर्शन हो गया, तो उस पे जब न्यूज़ आएगा तो वो बताएगा कि अरे इस लड़ाई में ना 2 लोग मारे गए। हम्म, बट जब आप प्लॉट पे पहुंचते हो तो आप देखते हो कि 200 लोग मरे। तो वो पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है वो। he talks about only something that pleases you. That's why there is a lots of people, lots of subscribers there. I don't know why, but ऐसा है। he appreciate people who is not good, या एक्टर्स को बुलाना, ये करना वो करना। बेसिकली ही इज अ बेटर बिजनेसमैन देन अ इंटेलेक्चुअल। हम्म, सो आप पॉडकास्ट भी देखोगे ना, तो उसका बिजनेस के अराउंड होता है। कोई मूवी रिलीज हो रही है तो बंदा आ गया, अभी ब्रह्मास्त्र की बात करनी है तो उससे बंदे को उठा लाया। सो दैट्स अ हब फॉर प्रमोशन एंड अदर स्टफ, बिजनेस थिंग। सो आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। रियल नॉलेज आपको, आप उसकी पॉडकास्ट देखो, आपको रियलिटी में क्या मिलेगा। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, हम्म। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा भी एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा था। अच्छा, 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 बहुत अच्छा। आपको सिर्फ चीनी मिलेगी वहाँ पे, आपको मिर्च नहीं मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा आपको। रियलिटी में तो सारे मसाले होते हैं, सिर्फ चीनी, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक। दुखद घटना एक भी आप बता दो कि उसने डिस्कस किया हो आज तक। देयर इज लाइक वेरी माइनर, लाइक वो उसमें भी वाराणसी। अच्छा निकाला होगा। नहीं, वाराणसी हाँ, मतलब थी कुछ स्टार्टिंग में, एंड फिर है ना? बीच में कुछ बैड नहीं एक्सपीरियंस के करेगा, वो कारण। करेगा ही नहीं, वो करेगा ही नहीं। हंसना ही नहीं चाहेगा बंदा। तो उसको देख के ना आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, अब मेरे में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पता नहीं, जब मैं अपने यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ही इज डूइंग अ बिजनेस, इज अ गुड बिजनेस गाय। अगर हम्म, आपको हार्श चीजें जाननी है, रियलिटी जाननी है, तो यू मस्ट रीड बुक्स। और साइंटिफिक पर्टिकुलर चीज, पर्टिकुलर, जिसका पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस ना हो, किसी और चीज का इन्फ्लुएंस। मतलब 2+2 अगर सीखना है तो आप मैथ्स के क्लास में जाओ, रणवीर से मत सीखो। वो कहेगा 2+2 कितना अच्छा है। आप कैसे डाइजेस्ट करोगे यार? देखो मैं भी 2+2 करता हूँ, सब 2+2 करते हैं।
I don't know. It's my personal opinion. Maybe he's a nice guy. He's doing good. I don't care. But that's how I see. हाँ, मैं ज़्यादातर श्वेताब को देखता हूँ. श्वेताब is one who gives us different perspective on different things. श्वेताब गंगवार है. गैंगस्टर पर्सपेक्टिव के नाम से है उसका पॉडकास्ट. एंड बेसिकली उसी को देख के मैं इंस्पायर हुआ कि यार मैं भी तो ऐसी बातें कर ही सकता हूँ. सो दैट्स व्हाई आई हैव अ पॉडकास्ट आल्सो. ये चीज़ है. Mhm. और देखो हम चले जाएंगे दुनिया से, आज छोड़ के, कल छोड़ के, कौन जानता है. लेकिन एक टाइमलाइन होना चाहिए. मेरा यही था कि मैंने अपनी लाइफ में क्या सीखा, आज उसका एक प्रमाण है मेरे पास कि मैं ऐसी ऐसी बातें किया करता था. इसका मतलब इस बंदे ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, या कुछ भी. मैं अपने आप को ही पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे एक ट्रेस मिलता है कि चलो यार, अगर 20 वीडियो मैंने डाली है किसी चीज़ पे, Mhm. तो वो मुझे याद दिलाता है कि हाँ यार, उस समय मेरी ये सोच थी पर्टिकुलर. एक मिनट. हाँ. तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, मैं किसी का नुकसान नहीं कर रहा. और इससे पता है क्या होता है फ़ायदा, कि आपको एक कम्युनिकेशन का जो होता है, झिझक होती है, वो हट जाती है. धीरे 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 आप फ्लुएंट हो जाते हो. आई एम एबल टू टॉक टू यू. आई एम नॉट साई गाय. Mhm. जस्ट बिकॉज आई फेस द कैमरा. आई कैन फेस द कैमरा. और सोचो ना, अभी हम दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में कितनी सारी वैल्यू एडिशन करी. अभी के अभी सोचो. यू कैन टेक इट एंड गो बैक टू योर होम राइट नाउ. और हम सेम एज के हैं. आई एम नॉट अ गुरु, यू आर नॉट अ शिष्य. वी ऑल आर By the way, what's your शेयरिंग. age? What's your age? How old are you? 26 होगी, 26 के आसपास. 96 born. 96 नहीं, मैं 94 5 के आस 4 के आसपास. 94. So it will be 27. 27. हाँ Yeah. वही. बूढ़ा 27. हूँ मैं. Yeah. How does it matter? नहीं. क्या हाँ, फर्क नहीं, पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? नॉलेज कहीं से भी आए, ले फर्क लेनी पड़ता चाहिए. है. अगर अगर मैं मुझे और सीखनी हो और मेरे पास जिंदगी कम पड़ जाए तो फर्क पड़ता है. हम्म. कई लोगों के साथ ये समस्या है. हमारे जहीर भाई के साथ था. 6 महीने की जिंदगी मिली थी भाई को. जहीर कौन? मुन्ना भाई एमबीबीएस में. अच्छा. तो उसका सही था कि सीख ले मरने से पहले यार, जीना सीख ले. यही है. हाँ. सही है. और यार ये सब, मतलब आई एम नो वन टू टेल यू एनीथिंग. हम्म. बट आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें. फॉर श्योर. यस. पक्की बात है. नशा करना है तो नॉलेज का करें. अभी देखो, अभी शायर भी हो गए. दिस इज बेस्ट नशा. और पता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो भी एक नशा ही होता है. नशा ही है. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू. आई एम नो वन टू सजेस्ट यू बाय द I वे. will work on it. No issues. But please try 5 push-ups, one push-up a day, increase to 5, 10, 12, 13, 14, 15, whatever. आपका ये छूट जाएगा. And you will look much No, better. no, actually, like, I'm not habitual. आदत नहीं है. कभी कभी, like, बहुत. एक्सरसाइज करते हो? हाँ. हाँ. You do exercise? Yeah. हाँ तो फिर I ठीक है. have some equipments हाँ तो in फिर my ठीक home है. itself. फिर ठीक. You know what you are doing ना कतम. Yes. Because I feel कि लोगों को आदत हो जाती है. Something that is addictive. Mm-hmm. और मैंने देखा है लोगों को. मतलब मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, तो ही वॉज नॉट अवेयर कि वो क्या कर रहा है. एंड ऑल डे ही यूज टू डू इज फू 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 पूरा दिन वही, उन्हीं लोगों के साथ रहना. सो आई हैव सीन कि भाई अंत में पता है क्या हुआ. हिज फादर डिस्कनेक्टेड हिम फ्रॉम फेसबुक एंड एवरीथिंग, और उस पर लिख दिया कि ये मर गया है, और उसको भेज दिया दूसरे देश. Mm-hmm. और
फिर वहाँ पे उसको मतलब आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन उसका चल रहा था, डिटॉक्सिफिकेशन एंड We सम, have. हाँ रिहैब, यस दैट्स एग्जैक्टली। और धीरे 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 फिर नाउ ही इज़ डूइंग एक्सरसाइज, ट्रैवलिंग एंड अदर स्टफ। नाउ ही इज़ लिविंग अ कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ, और आज वो बहुत अच्छा दिखता है। इज़ अ गुड बाइसेप्स और ये सब अच्छा है उसका, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ऑल्दो मेरी बात नहीं होती, मुझे अच्छा लगता है कि कोई सुधर गया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। क्या सिखाओगे अपने बच्चों को, क्या बताओगे? अगली जनरेशन को हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं लोग? मतलब इस Future. स्टेज पे आके आई थिंक कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज द नेक्स्ट जनरेशन। अभी तो बचपना था, लगता था कि अरे खेलो खाओ मस्ती करो, लेकिन एक समय आपकी ज़िंदगी में भी आएगा जब आप सोचोगे कि यार मुझे ना नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना है, आई हैव टू पास ऑन समथिंग विच इज़ वैल्यूबल। तो No, I think about sometimes to leave some legacy नहीं, जब behind आप, me. हाँ, जब आपके हो जाएंगे ना ऑफस्प्रिंग, बच्चे हो जाएंगे, तो आप फिर सोचोगे, मेरे हुए नहीं है बट मुझे लगता है आई हैव टू पास ऑन, आई हैव टू गेन समथिंग सो दैट आई कैन गिव Hmm. समथिंग। ये अर्जेस आते हैं मेरे अंदर। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ ताकि किसी का आइडल बन सकूँ। क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी से ही बहुत कुछ सीखा है। सो उन्होंने मुझे हर समय अच्छा डायरेक्शन दिया, खुद ही बताया कि, खुद ही बताते थे कि ये चीज़ें, ये दो चीज़ें हैं, तुम चूज कर लो कि कहाँ जाना है। Choices. चॉइसेस एंड राइट चॉइसेस। बड़ी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया हमें, तो मुझे लगता था कि इस पैसे को क्या मैं करते हैं अगर, फादर, क्या करते हैं? हमारे पिताजी की दुकान थी, अभी भी है, अब तो बड़ी दुकान हो गई है। जनरल स्टोर हाँ, या जनरल स्टोर थी। जनरल स्टोर? अच्छा। तो जब हम लोग छोटे थे तो मतलब 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, तो हमारी एक छोटी सी दुकान थी, बहुत ज़्यादा किसी मजबूरी में ही दुकान खोली थी। और फिर हमने बड़े करीब से देखा है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और कैसे, कितना मेहनत लगता है किसी भी एक चीज़ को अकम्प्लिश करने में, किसी को इंजीनियर बनाने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, व्हाट ऑल सेक्रीफाइस अ वन हैव टू डू। तो जब भी मैं पैसे खर्च करता था ना, तो आई यूज्ड टू लुक कि मैं कहाँ खर्च कर रहा हूँ, क्या इससे मेरा कुछ भला होगा या मेरे परिवार का कुछ भला होगा। अगर मुझे आंसर नो मिलता था तो मैं मना कर देता। जैसे किसी ने बोला कि चल भाई दारू पीने चल रहे, मैंने कहा यार दारू में तो पैसे भी लगेंगे, पैसे मैं दूंगा, और ये पैसे आ कहाँ से रहे, सोर्स क्या है इसका, उनकी मेहनत है। और फिर मेरे दिमाग में आता था कि यार वो दिन भर खड़े रहते हैं दुकान पे, इतनी तकलीफ करते हैं, तो मैं इसको पी के मेरा क्या होगा, मैं ऐसे हो जाऊंगा। तो मैं कहता था भाई सॉरी, मैं नहीं जा सकता, मेरे को कुछ काम है, मैं बहाने बना देता। एक आध बार किया है, ऐसी बात नहीं है, So are you a जस्ट टू kind of एक्सपीरियंस। introvert kind of person? फिर आप लेबल कर रहे हो इंट्रोवर्ट क्या होता है, पता नहीं। जहाँ जरूरत होती है बोल देता हूँ, जहाँ जरूरत नहीं है तो वहाँ चुप रहता हूँ ताकि थप्पड़ ना पड़े। अब भाई कहीं नहीं बोलना है, आप बोलोगे, कहोगे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं बोलूंगा, दैट डजंट मीन एनीथिंग ना ब्रो। अब जहाँ जरूरत है वहां भी नहीं बोल रहे, तो बकलोल कहलाएगा, इंट्रोवर्ट नहीं कहता, मैं बकलोल कहता हूँ उसको। Mhm. भाई वो बकलोल ही हुआ ना। मेरी, मेरे पैर पे किसी ने पैर रख रखा है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पसीने छूट रहे हैं मेरे, भाई Mhm. पैर हटा ले, बोलने में क्या जा रहा है। सो वो इंट्रोवर्ट नहीं, बकलोल है भाई। कम आउट ऑफ दैट बकलोली, आस्क से बोलो ना, भाई मेरे पैर से पैर हटा ले, दुख रहा है। क्या फर्क पड़ता है बोलने में, Mhm. मार थोड़ी देगा अगला। हाँ, इतना भी मत बोलो कि तुम्हारा ही गेम बच जाए। ये चीज है, लेबल नहीं करना चाहिए। जो आज इंट्रोवर्ट है वो कल एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे कैमरा रख के ऐसे कुछ कुछ बोलना चाहा, आज वो मिलियन सब्सक्राइबर हैं और पता नहीं क्या क्या कर। इंसान बदलते रहते हैं भाई। आज जो इंसान अच्छा है ना, आपका दोस्त है, हो सकता है कल साला आतंकवादी निकल जाए।
किस किस मामले में कहाँ फंस जाए। हम्म। तो लाइफ चेंज होती रहती है, मैं इस पे बिलीव करता हूँ कि जिंदगी बदलती रहती है, हर पल बदलते रहती है। आप बैठे हो ना अभी, मुझे नहीं पता कल आप कौन हो, कल आप बड़े आदमी बन जाओ भाई, बन जाना, बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। रातों रात अरबपति बन जाते लोग। रानू मंडल बीच में भीख मांग रही थी, आज सब जानते हैं, उसको थोड़ी फिर से, पता था उस दिन बाद क्या अरे होगा। फैक्ट पता है क्या, अभी फिर से वो वापस रोड पे आ गई है, फिर से भीख मांगने लगी। वो उसकी खुद की वो है। वो जो भी है, हाँ वापस से हाँ, रोड पे आ गई। वो खेल उसको, खत्म। वो उसने अर्न नहीं किया था ना, दैट इज द थिंग, उसने अर्न नहीं किया था, उसके पीछे मेहनत क्या थी उसकी, कुछ नहीं। जबरदस्ती किसी को उठा के आप पेंट लगा करके दिखा दो तो क्या होगा, वही होगा। हम्म। अर्न करने में समय लगता है। स्टीव जॉब ऐसे थोड़ी बन गया, रात में सोया था खड़ा हुआ स्टीव। भाई वो पर्टिकुलरली सोचता था मैं एप्पल के लिए क्या करूँ, कैसे करूँ, कितना करूँ। देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली, अब अभी आप देख लो ना, मेरा यूट्यूब चैनल है, अब मैं उस पर वीडियोज ही ना डालूं, बैठा रहूं सन्नाटा रखूं तो क्या हो। जब मैं वीडियोस डालता हूँ तो एक व्यू बढ़ जाता है, नहीं डालता तो नहीं बढ़ता, सामने रिजल्ट दिखता है। आपने एक किताब पढ़ी द सीक्रेट तो आज मेरे से इतनी बातें कर पाए। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी होती तो हम लोग, आप मेरी शक्ल देखते, मैं आपकी शक्ल देखता। फिर इस बटन दबा देते, एक बड़ा आसान बटन दे रखा है इसमें, स्टॉप और स्किप का। हट, क्या बात करूंगा इससे, हम्म। हट क्या बात करूंगा इससे। तो यही होता है, लोग बदलते रहते हैं, आप भी बदल जाओगे कुछ दिन बाद। दुर्घटनाएं भी बदलती है लोगों को, ये भी बात है। कई लोगों की जिंदगी में कुछ हादसे होते हैं जो इंसान को कम्प्लीटली बदल देती है। कई बार आप कहते हो ना कि यार ये इंसान पहले ऐसा था नहीं, है ना, वो भी बदलता है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं तो यही जानता हूँ भाई, कुछ भी हो सकता है। कैसा लगा, बहुत ही अमेजिंग सेशन ब्रो। मजा आ गया है ना। हम्म। मुझे भी बड़ा मजा आया। अब मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, या सेम ईयर ब्रो, सेम मम्मी ईयर। बुला रही थी। और ज़्यादा बात करेंगे ना तो वो इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है, फिर लगता है अरे यार पका रहा है, खा के घंटे हो गए। ये चीज़ हो जाती है। इट्स अ ठीक टू है। वे प्रोसेस। कुछ हम्म, तुमने सीखा, कुछ मैंने सीखा। यही मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप उस पर भी एक बार, उससे ये होगा ना, हम इंस्टेंटली मैसेज कर पाएंगे, बात कर सकेंगे कभी भी, अगर मर्जी होगी तो। या श्योर। हाँ,